लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी, तो इस पे उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी अगर न्यायिक हिरासत में है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि सजा तो और न्याय तो न्यायपालिका देगा। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। और मेरा पूरा यकीन और विश्वास है और आग्रह है सर्वोच्च न्यायालय से कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले और उसकी इंक्वायरी करे। उनका इतिहास जो भी रहा हो, जो अपराध हुआ उसकी वो सजा काट रहे थे जेल के अंदर, लेकिन जो अपराधी राज के संरक्षण में जिनका साम्राज्य चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में सवाल करने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। क्या अपराधियों को सजा देने का काम अदालतों का नहीं है? अदालत और विधि सम्मत सजा कठोर से कठोर अपराधियों को मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये सब हो रहा है, क्या ये उचित है? भारतीय जनता पार्टी शासन करने में असक्षम है। So opposition netas have jumped on this from AIMIM, Congress, Samajwadi Party, RJD. They are asking why is this claim not being investigated further? What is the family basically claiming here, and especially the son of Mukhtar Ansari? The son is claiming that on 19th March, that a poison, so to say, was mixed in the food and given to Mukhtar Ansari, who has been lodged in different cases, 61 criminal cases against him, and he was lodged in the Banda prison where he was given some food that had poison. By 26th March, he complains of abdominal pain at about 2 p.m. and is rushed to a hospital for a medical checkup. 28th March, Ansari has died of a heart attack. And even though there was a team of doctors that tried to, of course, revive him, rushed him to the hospital, treatment was given, but he could not survive. Samar Srivastav is joining me from Banda in Uttar Pradesh, where the mortal remains are, where the post-mortem is also being done. So investigation on this, a committee has also been set up, Samar, looking into the claims. What is the administration saying about the claim of the slow poisoning? Well, we were reporting this thing for last 1 week, and we came here at the same spot when Mukhtar Ansari was admitted, and back then we had a word with the hospital officials, with the doctors who treated Mukhtar Ansari. They clearly denied such claims of slow poison. Even the jail administration said that this could be due to the longer fasting, due to the roza, that's why such thing could have happened, because Mukhtar was obviously unwell since the time he came from Punjab to the UP Banda jail. His health continued to deteriorate, and that could be one of the reasons that he had a high sugar level and various other problems he had with his body with the increasing age. So they completely denied the fact of that slow poisoning. But Mukhtar Ansari and his advocates and even Afzal Ansari, his brother, kept on claiming the same thing and again. And now his brother Sibaktullah Ansari and his son Umar Ansari are also on the same line, where they all are saying that Mukhtar Ansari was killed in a conspiracy and his food was poisoned. Though it's a matter of inquiry by the officials whether this is the truth or not, but the bigger thing is that the post-mortem is happening, and what we are getting from sources that the dead body of Mukhtar Ansari will be handed over to the family, to Umar Ansari and two of his niece at around between 1 p.m. and 2 p.m. and later the body will be taken with an ambulance which has already arrived at this place. So last rites, that means, will be done in Ghazipur, where his residential locality where he had stayed all this. Well, in fact, that is also where a lot of his extortion network was run. But as Samarth is also telling us, he's had medical history. He had been unwell for some years, ever since he was brought from Punjab to Uttar Pradesh. That, remember, at this point, who was Mukhtar Ansari? A don, a gangster turned neta, and also had served as a 5-time MLA from Mao Sadar. But his criminal history was well known. 61 criminal cases at least were filed against Mukhtar Ansari, who operated from the late 90s into early 2000.
Mukhtar Ansari was also sentenced in 8 cases, but many of these sentencing and convictions came much later, in fact recently in the Yogi Adityanath government. Sentenced to life imprisonment in 2 cases at least, including murder and of keeping unlicensed weapons. He was convicted in Avdesh Rai murder case recently in 2023. He was sentenced to 4 years jail term under the Gangsters Act also just about a few months ago in 2023. One of the big issues, and that also had gained a lot of prominence, was a fake arms license case. Just about a few months ago, he had been given a life term in it. He had been lodged in the Banda prison since April 2021. But one of the biggest high-profile cases that he had been accused of, convicted in an MP-MLA court recently, that was for the murder by Mukhtar Ansari's gang of BJP MLA Krishnanand Rai, only because Krishnanand Rai had won against Ansari's brother in the same constituency in Uttar Pradesh. Amid all of this, remember, a lot of witnesses have also started to come forth to speak against the extortion criminal network Mukhtar Ansari has run riot for years in Uttar Pradesh. Dead at the age of 80 in Banda prison after he suffered a cardiac arrest, as has been confirmed by the hospital authorities. This gangster politician was rushed to a medical college where he died during treatment, but political showdown has peaked. His son, Umar Ansari, has made a claim that it wasn't simply a heart attack, a cardiac arrest. His father had been poisoned slowly and steadily. Umar Ansari is alleging that Mukhtar Ansari was ignored by the jail officials, did not pay much attention to his treatment, and that slowly and steadily he died. He's likely to seek judicial recourse also in this case and has expressed confidence in India's judiciary. But netas from across party lines have expressed condolences on Ansari's death. AIMIM chief Asaduddin Owaisi has said government did not pay attention toward Ansari despite complaints of suspected food poisoning days ago. RJD's Tejashwi Yadav, Samajwadi Party, Congress Party, Bahujan Samaj Party, from which he had also won as an MLA, are alleging that Ansari's health was deliberately ignored. He was given a slow poison. Investigation must be ordered in this case. Interestingly, all of these are opposition parties. Listen in to what netas are saying. मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी, तो इस पे उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी अगर न्यायिक हिरासत में है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि सजा तो और न्याय तो न्यायपालिका देगा। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। और मेरा पूरा यकीन और विश्वास है और आग्रह है सर्वोच्च न्यायालय से कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले और उसकी इंक्वायरी करे। उनका इतिहास जो भी रहा हो, जो अपराध हुआ उसकी वो सजा काट रहे थे जेल के अंदर। लेकिन जो अपराधी राज के संरक्षण में जिनका साम्राज्य चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में सवाल करने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। पिछले कई सालों से रमज़ानों में इस तरीके से जेल में रहने वाले जो चाहे शहाबुद्दीन भाई हों, चाहे अतीक चकिया रहे हों, चाहे मुख्तार भाई का इस बार होना, ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना है और कहीं ना कहीं इससे संविधान की धज्जियां उड़ाना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के बल पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने जेल में रहने संरक्षण में रहते हुए इस तरीके की मौतें हो रही हैं और उसको बीमारी की शक्ल देने की बात कर रही है, चाहे वो पहले भी हो चुका है इस तरीके। और आज जिस तरह मुख्तार भाई के साथ हुआ, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या अपराधियों को सजा देने का काम अदालतों का नहीं है? अदालत और विधि सम्मत सजा कठोर से कठोर अपराधियों को मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये सब हो रहा है, क्या ये उचित है? भारतीय जनता पार्टी शासन करने में असक्षम है। The dawn-turned Neta, Mukhtar Ansari, has died of heart attack as confirmed by the medical administration yesterday evening. But his son has come to make a massive allegation. Now the family is alleging that this was not simply a heart attack, but slow poisoning. He's claiming that the father was given poison in the food. It was on 19th March, and then slowly it seeped into the body.
Now, this death claim that they are bringing forth is they are saying that he was lodged in prison and constantly ignored with regard to the treatment. Now, Mukhtar Ansari, remember the last visual we have of him was of 19th of March when he was brought in for a medical procedure to that same medical college, and that he had reported of an abdominal pain. He was rushed to, after the cardiac arrest that happened yesterday, he was rushed to a hospital, and a team of doctors also took him to the hospital. A judicial inquiry has now been set up comprising of a 3-member team that has been ordered to inquire more into Ansari's death. जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्हें माननीय न्यायालय में जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और क्या कहेंगे? देखिए, उस दिन भी आप आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी पिता से और बिना देखे आप वापस लौट गए थे। वो बीत गया जो आज हम लोगों के सामने है, हम उसको आगे लगा रहे हैं। स्वाभाविक है हमारा इमोशनल होना और हमारा कुछ ना बोलना। आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती, वही हमारे हाल पर रहता। उमर जी, ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो जाएगा? कल सुबह। कल होगा? कल सुबह। कोई भी हमदर्द अगर हमारे दुख में शामिल है तो वो या शोर शराबा या कोई धक्का मुक्की, अगर हमारे परिवार का कोई हमदर्द है जिसको दुख है, वो इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कोई तमाशा बनने आया हम उसकी नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे घर का है, जो हमारे दुख में है, उसको हमारा दुख समझना होगा, अपना दुख मानना होगा। भाई प्लीज, नए लड़के हैं, समझाइए। बाबू देखो, हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग उनकी बात मान जाइए। इससे बड़ा गम हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से ये मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि आप लोग वापस चले जाइए। हम लोग कहना मान लीजिए, हम लोग की इज्जत रखिए। आप लोग लगातार वो पहले से कहते रहे कि जय पॉइजन दिया जा रहा है, इस तरीके की बातें थी, क्या कहेंगे आप? वो अपने खतरे का एहसास करके बताते रहे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए कि वो सबकी साजिश से हो रहा था। ध्यान कोई क्यों दे? इतनी जघन्य घटना होने के बाद मुझे तो पूरी आशा थी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय खुद संज्ञान लेगा कि इस घटना की कोई न्यायिक जांच करावे, लेकिन अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है। बहरहाल हम सबको ऊपर वाले पे भरोसा है, वो जरूर इस षड्यंत्रकारियों से बदला लेगा। राजनीतिक रूप से भी कई लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी है, कई पार्टियों ने भी, इसके अलावा कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी जो उनकी मौत हुई है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है कोई साजिश है इसके पीछे, किस तरीके से, या पूरा षड्यंत्र किया गया? सब कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ है, उसमें नो डाउट। कोई रिपोर्ट आवे, कोई कुछ कहे, लेकिन सच तो सच है। उनके शरीर को आप देखेंगे, कहीं नहीं कह सकता कि कोई आदमी, बीमार आदमी मरा है, बल्कि सोए हुए हैं, और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हम एज ए पुलिस अधिकारी जानते हैं कि इस तरह के माफियाओं का दिल कितना बड़ा होता है। बहुत छोटा दिल होता है। ये केवल अपना एक माहौल भय का बना के, इस तरह से डरा धमका के 10 गाड़ियों का काफिला 50 नाल लेके बंदूक घूमते इसीलिए हैं क्योंकि ये स्वयं डरे होते हैं। तो जब वो सब भी हट जाता है, सामने कोई साथ चलने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का, तो वो डर फिर इन पे हावी हो जाता है, और वही परिणति इनकी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका तो काम है लगाना, और इस पे आगे न्यायालय देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। निर्णय तो न्यायालय में ही होते हैं। The preparations are being made for the final rites, the final cremation of Mukhtar Ansari, and we are here on the ground zero at the cremation ground where you can see the preparations are being made. The qabr is now being prepared for Mukhtar Ansari, and here only his body will be buried under the soil.
with the fact how the family members has constantly made big acquisition over the administration and the kind of treatment which was given. But just after the news came out and the information to the family, the whole area of Mohammadabad is under grief, and now the preparations are being made for the final rites. You see in the visuals exclusively on India Today how there has been preparations for the final rites. The measurements are being taken, the qabr which is being dig here you can certainly see, and this is the place where Mukhtar Ansari will be buried under the soil for the cremation of the body. Now, India Today spoke with former UP DSP Shailendra Singh about Ansari's death. He recounted his days of horror when Don Ansari was in fact at his peak. Here's that conversation. आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कितना रिलीव्ड हैं आप? क्योंकि सब अगर भुक्तभोगी तो कई हैं, लेकिन आप वैसे जीवंत भुक्तभोगी हैं उनके, जिनको कि अपना पूरा करियर सब कुछ आपने दांव पर लगा दिया सिर्फ एक बात से कि आप पीछे नहीं हटे। बिल्कुल सही बात है। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है, और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा वो केवल हम लोग जानते हैं। तो वो घटना अगर मैं याद करता हूँ, सब कुछ है, तो आज मुझे इस बात का संतोष है कि जो इसने किया था उस तरह से ये खुद अपने ऊपर ये तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति में देखता था आप लोग के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो मुझे इस बात का होता था कि देखो जिसका साम्राज्य इतना था कि सरकार इसके आगे झुक जाती थी, पुलिस प्रशासन की तो हिम्मत ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता था इसके खिलाफ, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। आज उसकी क्या स्थिति हुई, इस व्हील चेयर पर घसीट के आया पंजाब से, तो जो किया था वो सामने आया, और मुझे इस बात की रिलीफ है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। थोड़ा सा रिकाउंट कर सकते हैं आप उस दिन को, उस वक्त को जो आपके साथ हुआ था? अब उस समय तो बहुत विपरीत परिस्थिति थी, सोचना बड़ा, मैं नहीं चाहता हूँ उस चीज को सोचना, कि हम लोग और हमारी टीम जान पे खेल के रिकवर किए। लाइट मशीन गन की रिकवरी एकमात्र रिकवरी अब तक उत्तर प्रदेश की है, ना पहले कभी हुई, ना 20 साल से अब हुई है, 20 साल में। This is what the family now is claiming. They do not believe that Mukhtar Ansari has just died of a cardiac arrest. The family says on March 19, this is what happened. The son alleged that poison was being given to his father, Mukhtar Ansari. This is what he claimed on March 19. On March 26, Mukhtar Ansari complained of abdominal pain at about 2 p.m. in the afternoon. Ansari was then rushed to Banda hospital for immediate medical attention. And then on March 28, Ansari died of a heart attack. Now the family doesn't believe this. They believe that there is more to it than meets the eye. They want to find out more details about what exactly happened, and all of that, of course, will be revealed through, of course, the post-mortem report which has been conducted. The post-mortem has been conducted. You can see images now of various areas where Mukhtar Ansari was in fact prominent. In Banda, in Ghazipur, he was in Banda jail. Ghazipur was where he in fact hailed from. That's where his residence is. Prayagraj and Kastganj as well, where his son is lodged in jail as well, Abbas Ansari. In all of these areas, security has now been beefed up. Okay, news that's coming in right now. Mukhtar Ansari's family could file a complaint in the Allahabad High Court today. An application can be filed pending, in fact, demanding the release of MLA son Abbas Ansari, lodged in Kastganj jail on parole. An application will be filed demanding permission to attend the funeral of Mukhtar Ansari. On the basis of urgency, a demand can be heard from the High Court for the release of Abbas Ansari on parole. Will be mentioned for hearing in the Chief Justice's court. Now, even 2 days ago, after Mukhtar Ansari fell ill, the family had talked to their lawyers. So the family could now be filing an application before the Allahabad High Court to release MLA son Abbas Ansari, who's in Kastganj jail, to be released on parole to attend the funeral of his
father Mukhtar Ansari. 2 days ago as well, when Mukhtar Ansari had fallen ill, the family had spoken with their lawyers. This is something which could be demanded on an emergency basis, a hearing on the same. Abhishek Mishra is joining us for more on this. Abhishek, what more can you tell us about this application that the family of Mukhtar Ansari is likely to